Very good morning, 7th class. Today we will cover DIGI for the 5th chapter, that is rulers and building. ठीक है, इसके DIGI को आज हम कवर करते हैं. Engineering skills in architecture. Architecture पढ़ा था हमने कि किस तरह के buildings थी. Jenny is making a doll. All that she needs to do to complete it is place the roof. Oh no! Look at the house shaking and collapsing. Where did she go wrong? देखो ये कह रही है कि देखो उसका जो रूम था वो collapse हो रहा है. Where did she go wrong? कि कहाँ गलती हुई, किस वजह से ऐसा हुआ. Jenny should have used harder material for the walls, or a lighter material for the roof. From ancient times, Indian builders have been building structures for different purposes and weather conditions. In the process, they had improved their engineering skills immensely. Characteristics of Indian construction. By 880, Indian builders were building forts, grand palaces, temples, tanks, wells, and public houses or viharas. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ना कि ओल्ड एंशिएंट टाइम में, पहले के टाइम में जो है इंडियन कंस्ट्रक्टर्स क्या क्या बनवाते थे. मंदिर, मस्जिद, बड़े बड़े फोर्ट्स, किले, है ना, और महल और पब्लिक हाउसेस, इस तरीके की चीज़ें, वेल्स, ये सब कंस्ट्रक्ट करा रहे थे. देखो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. अभी जैसे हमने ये लड़की के एग्जांपल से देखा कि अगर आपकी वॉल्स हल्की होंगी और रूफ हैवी होगी तो क्या होगा, चांसेस हैं कि वो गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा. तो एक राइट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको किस ढंग से हमें बनाना है. The Mughals introduced tombs, mosques, caravanserais, bazaars, and bowries. Construction techniques constantly improve. Though arches were an old construction feat by Buddhist times, they were supporting massive superstructures. The superstructure was the part of the building above the ground floor. Earlier, the construction of the superstructure was largely triviate. In other words, vertical pillars or columns supported the superstructure on horizontal beams. देखो स्टूडेंट, जो ये लास्ट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे इनको सपोर्ट कैसे मिल रही थी, किस तरीके से इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो है बन के तैयार हो रहे थे, क्योंकि इनको बीम्स की हेल्प से और पिलर्स की हेल्प से बनाया जाता था. ठीक है, जैसे अभी आपने पिक्चर में देखा ना कि बड़े बड़े पिलर्स और बीम्स जो है लगाए जाते थे बीच बीच में, तभी इतने बड़े बड़े महल जो है उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट हो रहे थे. In the caves like the stupas, the heavy circular dome was constructed on a group of arches. देखो इस तरीके से, देखो जब ये इतना हैवी ग्रुप जो ये बनाया गया है डोम, तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ ट्रायंगुलर और सर्कुलर आर्क्स, इस तरीके से इसको सपोर्ट देने के लिए ताकि ये गिरे ना. Medieval Hindu style of construction. अब हम देखते हैं medieval time. The hallmark of medieval Hindu construction, especially temple constructions, was the use of sculpting techniques. Many Hindu temples were rock cut. रॉक कट क्या होते हैं, चट्टानों को काट के बनाए गए थे, यानी कि उस टाइम पे मंदिरों को चट्टाने काट काट कर बनाया जाता था, रॉक कट. ठीक है, Even the beams, columns, and other architectural features were carved. The secret behind many magnificent temples
was the square or mandala, the basic unit in Indian architecture. In the Kandariya Mahadeva temple at Khajuraho, for example, the floor plan is composed of squares. By using squares, Indian architects could create complex structure. देखो तो कैसे किस तरीके से बनाए जा रहे थे, इन स्क्वायर्स की हेल्प से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस बनाए जा रहे थे। यानी कि देखो ये फर्श का जो वहां पे मंदिर है उसमें फर्श किस तरीके से बनाया गया है, ये जो है स्क्वायर के फॉर्म में, और इन्हीं स्क्वायर्स को जो है जोड़ के इनसे डिजाइन्स बना के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस जो है बनाए जा रहे थे हिंदुओं के द्वारा। Cord belling was another feature popular around this time. Cord bells are the decorated brackets that jut out of walls and support structures as cornices and parapets. देखो स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था ना, Another distinguishing feature इस तरीके से बाहर पिलर्स पे किस तरीके से डिजाइन्स बना होता था सुंदर, है ना, वही ये बताया आपको। of the medieval period temple architecture was the heavy, intricately sculpted temple top known as Shikhara in the north and Vimanam in the south. जो ये टॉप जो होता है ना, देखो ये शिकारा बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जो ऊपर का टॉप का जो पोर्शन होता है उसको। Can you guess, without cranes, how these builders carry the heavy shikaras to the temple top? अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये तो वैसे भी आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हैवी हैवी जो पत्थर होते थे, बड़े बड़े जो है शिकारास होते थे, जो ये टॉप पे एस्टेब्लिश करते थे, इस तरीके से इनको किस तरीके से इतने टॉप पे पहुंचाया जाता था, क्योंकि उस टाइम तो क्रेन्स भी नहीं होती थी, है ना। तो हम इसको पढ़ते हैं, चैप्टर में तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। At the Rajarajeshwara temple in Tanjavur, architects built an inclined path to the temple top to lift the 90-ton stone for its shikhara. देखो हमने बताया था ना, पढ़ा था ना कि इस तरीके का एक पाथ बनाया जाता था, इंक्लाइन पाथ, ठीक है, और ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को फिर इसकी मदद से ऊपर तक लेके जाया जाता था। They then placed the shikhara stone on rollers and rolled it all the way to the top. They made the path 4 kilometers away from the temple to avoid steepness. देखो 4 किलोमीटर लंबा ये Right. रास्ता बनाया गया था ताकि जो है ये पत्थर नीचे न गिरे, यानी कि स्टिपी ना हो। एकदम से छोटा बनाएंगे तो क्या होगा, एकदम से ऐसा स्टिपी हो जाएगा, तो उसको स्टिपी ना करने के लिए, यानी कि तीखा एक रास्ता ना बने बिल्कुल कि एकदम से सीधी खड़ी चढ़ाई हो, उस पर इतना भारी पत्थर लेके नहीं चढ़ सकते, तो इसलिए 4 किलोमीटर लंबा कम स्लैंटिंग जो है पाथ बनाया गया था ताकि आसानी से उस पर इतने भारी पत्थरों को लेके चढ़ा जा सके। Astani construction had a few unique features, such as the jalbis and jarukas. ठीक है, तो ये भी एक फीचर Rajasthani building जो है जालीज या झरोखे जो है बनाए जा रहे थे, इन बिल्डिंग्स का एक मेन फीचर था। were made of mud, wood, and marble. A mixture of jaggery and shell-lined base was used for cementing. गुड़ का इस्तेमाल होता था, शेल लाइन का इस्तेमाल होता था, देखो कंस्ट्रक्शन में। Construction under the reign of the Sultans. The Islamic style of architecture appeared during the reign of the Sultans. The Qutb Minar is the best example of this period. It had a curved and angular surface, arches, corbels, jallis, and ornamentation popular in the architecture of the time was used in this one structure. देखो ये क्या है, ये अलग अलग फीचर्स है। आर्चीज, कॉर्बेल्स हमने देखा जो नक्काशी की जाती थी, जालीज या झरोखे, ऑर्नामेंटेशन वर्क, ये इस तरीके का जो ये डिजाइन्स बनाते थे, ये सारे जो है फीचर्स होते थे कंस्ट्रक्शन के उस समय के बिल्डिंग्स के। During the Qutubs, the ornamental design of the Qutub was discontinued and
and structures became functional and sturdy, like the Barakhamba and Tughlaqabad. The material used were sandstone and marble. Construction during the Mughal period. The Mughal period was the next most important period in Indian architecture, especially the reign of Shah Jahan. The Mughal style began to take shape from Akbar's. देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो मुगल्स का टाइम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उस समय में मुगल्स ने जो है बहुत बड़े बड़े ग्रैंड कंस्ट्रक्शंस करवाए थे जिनको हम आज तक भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अकबर के रेन में कौन कौन सी कंस्ट्रक्शंस हुए मुगल पीरियड में। Time. But it was during Shah Jahan's reign that Indian architecture experienced its golden period. लेकिन देखो शाहजहां के टाइम में ये बता रहे हैं कि एक गोल्डन पीरियड था आर्किटेक्चर का, जब बहुत जो है अच्छा काम जो है जो आर्किटेक्चर है वो हमें देखने को मिलता है। किसके रेन में? हमें शाहजहां के रेन में देखने को मिलता है। शाहजहां जब रूल कर रहा था उसके टाइम पे जो है तो बहुत अलग ही आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। Taj Mahal, with its elaborate carving, Rajasthani jalis, Traviate and art styles, showcased the best of that period. The centerpiece was the dome and the minaret. Marble was extensively used inside and outside the Taj. In addition, sandstone and bricks were also used. A new way of concrete making also evolved around this time. Limestone, cement and stone chips were mixed and made to set into a hard form of concrete. With the help of this concrete, construction of large, elaborate structures became easier and faster. Mind map. Take the chance to know more about the engineering skills in Indian architecture. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अलग अलग पीरियड्स पे किस किस तरीके के आर्किटेक्चर जो है उस समय में था, क्या क्या फीचर्स थे अलग अलग टाइम के आर्किटेक्चर के। क्लियर? अब रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं हम। तो धर्म से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स थे, मंदिर मस्जिद, वो किस तरीके से बने थे। Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures in India. The first were forts, palaces and tombs, which were impressively grand structures for their personal use. The second were temples, mosques, tanks and wells, which were structures meant for public use. In this set, देखो स्टूडेंट्स कि कुछ तो जो कंस्ट्रक्शंस थे वो राजा और जो रूलर्स होते थे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाते थे, लेकिन कुछ जो है आम लोगों के लिए, जैसे कि टेम्पल्स हुए, मॉस्क्स हुए, टैंक्स और वेल्स हैं, ये आम लोगों के लिए भी, प्रजा के लिए भी बनाए जाते थे, कंस्ट्रक्ट करवाए जाते थे। ठीक है? we will learn more about the chief architectural features of these public structures. जिनको हम पब्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है? Most temples had an ornamented gateway leading to a main hall or Mahamandapa. The image of the chief deity was placed in the inner sanctum, also called the Garbhagriha. This was the place where rituals were performed. The temple. गर्भगृह क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, जहाँ पे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, मंदिर का वो हिस्सा जहाँ पे पूजा अर्चना यानी कि रिचुअल्स को किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। Temples were often decorated with elaborately carved sculptures. देखो इस तरीके की नक्काशी। Tower-like shikaras crowned the sanctums of the temples.
These shikaras were of two kinds. There were the beehive-shaped shikaras found in the Nagara-style temples of North India, and the shikaras made of progressively smaller stories of pavilions found in the Dravida-style temples of South India. Constructing these shikaras was no easy task. Take a look at what was involved in constructing the Rajarajeshwara temple at Tanjavur. What about mosques built in India from the 12th century onwards? Mosques built between the 12th and 15th centuries had multi-pillared roofs with arches, as seen in the Begum मॉस्क यानी कि मस्जिदों के बारे में आपको बता रहे हैं कि इनके क्या फीचर्स थे। Mosque and the Jamaat Khana Mosque. In the 16th and 17th centuries, the Mughals brought their own style of architecture that included pointed, onion-shaped domes and arches, as seen in Delhi's Jama Masjid. देखो इस तरीके के अनियन शेप जो कि पॉइंटेड होते थे ऊपर से, इस तरीके के मुगल्स ने जो है मॉस्क बनवाने शुरू करे। ठीक है, इस तरीके की मस्जिद जो कि ऑनियन शेप होती थी और ऊपर से जो है ये पॉइंटेड होती थी, जैसे कि जामा मस्जिद। There were also minarets and prayer halls. Minarets क्या होता है? मीनारे। Some mosques, such as the Jamali Kamali, had eye-catching verses from the Quran inscribed on their walls. From the 12th century onwards, two technological and stylistic developments are noticeable in temples and mosques. The first is that arches sometimes carried the weight of the superstructure above the doors and windows. This architectural form was called arcuate. The second is that limestone cement was increasingly used in construction. This was very high quality cement which, when mixed with stone chips, hardened into concrete. It made constructing large structures easy. देखो स्टूडेंट्स, लाइमस्टोन सीमेंट यानी कि चूना पत्थर का सीमेंट, और जब स्टोन चिप्स के साथ, ये हमने चैप्टर में भी रीड आउट किया था, जब हम इनको स्टोन चिप्स के साथ मिला देते हैं तो ये कंक्रीट बन जाता है, जो कि एक बहुत मजबूत एक जो है वो तैयार हो जाता है आपका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, जिससे बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। And faster. But why did rulers build these temples and mosques? Discuss among yourselves and share. देखो ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्यों जो है ये रूलर्स जो है मंदिर या मस्जिद बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? क्योंकि इनको जो है, एक तो पहली चीज़ तो ये थी कि इनको ये दिखाना था लोगों को कि हम प्रजा का जो है एक विश्वास, एक प्यार जीतना चाहते थे कि हाँ हम आप लोगों की केयर करते हैं। प्रजा का जो है प्रेज, एक तारीफ पाने के लिए ये लोग इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते थे। दूसरा क्या था कि ये लोग ये शो करना चाहते थे कि कितने जो रिच हैं ये लोग, कि दूसरे राज्यों को ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग कितने जो हमारे टेरिटरी है वो कितनी रिच टेरिटरी है, हम जो है बहुत अमीर हैं, रिच हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए ये लोग इस तरीके की कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करते थे उस समय में। ठीक है, Temples were constructed as symbols of power and wealth, as well as the devotion of the patron. For example, the Rajarajeshwara temple has an inscription stating that King Rajarajadeva built it for the worship of his god, Rajarajeshwara. Did you notice the similarity between the names of the king and the god? Indeed, it was quite common for the king to take a god's name, because it was auspicious, and also so that he would appear godlike. The deity that the king देखो राजा अपने नाम अपने भगवान के लिए क्यों रखते थे? भगवान के नाम से मिलते जुलते, कि पहली चीज़ तो भगवान के प्रति अपनी भक्ति को, श्रद्धा को दिखाना चाहते थे। दूसरा वो ये दिखाना चाहते थे कि हम खुद भी भगवान की तरह ही हैं। ठीक है, तो इसलिए वो भगवान से मिलते जुलते नाम अपने रखते थे।
worshipped was the main deity in the temple. Other lesser deities in the temples were the gods and goddesses of the allies and subordinates of the king. And as each new dynasty came to power, the kings constructed temples to assert their close relationship with God as well as their moral right to be rulers. मंदिर क्यों बनवाते थे कि ये भगवान के भेजे हुए ही दूत है, अपने आप को ये दिखाना चाहते थे, और दूसरा रूल करना इनका जो है एक राइट है, ये दिखाने के लिए ये लोग इस तरीके की मंदिर या मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करते थे। Unlike the Hindu rulers, the Muslim sultans and badshaahs did not claim to be incarnations of God. However, in Persian, चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि हिंदू तो है अपने आप को दिखाते थे कि वी आर द इनकारनेशन, हम भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं था, वो ये नहीं बोलते थे कि हम भगवान के ही इनकारनेशन हैं, ठीक है, लेकिन क्या है देखते हैं। Court Chronicles, the Sultan is described as the shadow of God. An inscription in the Delhi mosque explained that God chose Aladdin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. Apart from temples and mosques, rulers often constructed large and small tanks and reservoirs for use by ordinary people. देखो मंदिर मस्जिदों के अलावा जो है रिजर्वायर्स, रिवर्स वगैरह भी जो है आम लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट करवाते थे रूलर्स। Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple or mosque, such as the small tank seen in the Jama Masjid. And why do you think the rulers constructed these tanks? अब हम देखते हैं कि इस तरीके के टैंक्स जो है ये रूलर्स टैंक्स या रिजर्वायर क्यों कंस्ट्रक्ट करवाते थे उस समय में। It was because it was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty, when the heavens would not withhold rain. At the same time, क्या दिखाते थे ये देखो कि हमारा जो रूल है, हमारा जो राज है वो बिल्कुल प्लेंटी से भरा हुआ है, यानी कि हमारे पास हर चीज़ की प्लेंटी है। जब अगर बारिश भी कम होगी तो हमारे पास रिसोर्सेज है आपको पानी देने के लिए, हमारे पास इतना जो है रिसोर्सेज की प्लेंटी है, ये दिखाने के लिए, ठीक है, कि हम भगवान के समान राज कर रहे हैं, कि अगर हेवनली वाटर भी खत्म हो जाएगा, यानी कि बारिश का पानी भी खत्म हो जाएगा, तो हमने जो है टैंक्स या रिजर्वायर बना रखे हैं ताकि लोगों को पानी की कमी ना हो, ठीक है। making water available by constructing tanks and reservoirs was considered praiseworthy. Sultan Iltutmish constructed a large reservoir just outside Delhi-e-Kuna. It was called the Haze Sultani, or the King's Reservoir. He won universal respect for this. अब हम देखेंगे डिस्ट्रक्शन, As मंदिरों को तोड़ा mentioned क्यों जाता before, था। temples were built to demonstrate the king's power, wealth, and devotion to God. It is hardly surprising then that when the rulers attacked another kingdom, they targeted these buildings. For example, in the 9th century, when the Pandyan king Srimara Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated King Sena I, the Buddhist monk and chronicler Dhammakiti noted he removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace, and the golden images in the various monasteries. All these he seized. In retaliation, the next Sinhalese ruler, King Sena II, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas, and make a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajin तो देखो हमने देखा कि जो मंदिर होते थे, मस्जिद होते थे, ये राजा अपनी पावर को शो करने के लिए भी कंस्ट्रक्ट करवाते थे। तो जब क्या होता था, दूसरा राजा
एक राजा दूसरे राज्य में जब अटैक करता था तो सबसे पहले वो उन्हीं चीज़ों पे अटैक करता था जो राजा की जो है प्रॉस्पेरिटी को दिखाते थे, ठीक है। तो इन मंदिरों को लूटा जाता था, ठीक है। जो भगवान की मूर्तियाँ होती थी उनको चुरा लिया जाता था, ठीक है। क्यों? ताकि वो लोग ये दिखा सके कि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको हमने कंट्रोल कर लिया, अपने हाथों में ले लिया है। ये सब चीज़ें दिखाने के लिए भी जो है अटैक करते थे ये। Indra I built a Shiva temple in his capital. He filled it with prized statues seized from defeated rulers. During his campaigns in the subcontinent, Sultan Muhammad of Ghazni attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Although Sultan Mahmud was not a very important ruler, by destroying temples, especially the one in Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. Here are the chance to recall the main points covered in this session. The Taj Mahal is one of the most recognizable structures in the world. Did you know that it is the finest example of Mughal architecture? Mughal architecture is a blend of Islamic, Persian and Indian architecture. Mughal architecture reflects not only the architectural techniques, but also their love for gardens. Let's learn more about the different aspects of Mughal architecture. तो मुगल आर्किटेक्चर में गार्डन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। The Mughals built impressive tombs, one of which is the Humayun's tomb. Humayun's tomb was built on the banks of the Yamuna River. It was designed by a Persian architect named Merak Mirza Ghilas, but built by Indian artisans and craftsmen. The central dome and the tall gateway, or Pishak, first visible in Humayun's tomb, are borrowed from the tombs of Central Asia. In years to come, they became an important aspect of the Mughal architecture. The tomb is found in the central domed chamber that has been built on a high platform and has archways on the side. The top of its central dome reaches about 140 feet from the ground. The dome is double-layered. As a contrast to the pure white exterior dome, the rest of the building is made up of red sandstone with white and black marble and yellow sandstone detailing to relieve the monotony. Did you know? The Humayun tomb is considered to be the precursor of the Taj Mahal and was declared a UNESCO World Heritage Site in 1993. Apart from tombs, Mughals have also built forts. Can you name any one fort that was built by the Mughals but is of national importance even today? देखो स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा एक Discuss फोर्ट the है, significance of the fort and share with the rest of the ऐसा class. कौन सा फोर्ट है जो मुगल्स ने बनवाया था और जिसकी आज भी इम्पोर्टेंस है? कौन सा फोर्ट है वो? रेड फोर्ट है, जहाँ से आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस को देते हैं, ठीक है। तो रेड फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जो मुगल्स ने कंस्ट्रक्ट करवाया था जिसका रेलेवेंस आज भी हमारे लाइफ में है। One of the forts, which is a symbol of architectural brilliance and power, is the Red Fort. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan in the walled city of Old Delhi, India. Shah Jahan's reign saw the fusion of different types of Mughal architecture. The Red Fort is one such monument that is made from red sandstone and marble. Ceremonial halls inside the fort like Divan-e-Am, Hall of Public Audience, and Divan-e-Khas, Hall of Private Audience, are carefully planned. They are within the courtyard of the main enclosure and are referred to as Chihil Sutur,
or the 40 pillared halls. These audience halls were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which the throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer, as everybody faced that direction when court was in session. The idea of the king as a representative God on earth was suggested by these architectural features. Behind the emperor's throne, there were a series of pietra dura inlays, that is, colored stones placed in depressions into marble or sandstone, creating beautiful ornate patterns. These pietra dura inlays depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equal and living in harmony. Apart from tombs, Mughals have also built forts. Can you name any one fort that was built by the Mughals but is of national importance? Like Divan-e-Am, everybody faced that direction. Pietra dura inlays, that is, pietra dura, the high and the low as equal and living in harmony. One thing that is common in Mughal architecture, be it forts or tombs, is the gardens. The Chahar Bagh style of garden was first introduced by Akbar into India. Do you know why these gardens were called Chahar Bagh? देखो हमने पढ़ा था कि चार बाग हम इनको क्यों कहते हैं? It is because these gardens were laid within rectangular walled enclosures and divided into four quarters by artificial channels. ठीक है, आर्टिफिशियल Beginning चैनल with से Akbar, चार some भागों of में the बांट most दिया. beautiful gardens were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Lahore, Kashmir, Agra, and Delhi. List down the names of some famous gardens that owe their origins to the Mughal period and that can still be found in these cities. Humayun's tomb was the first garden tomb of the Indian subcontinent. Even Taj Mahal, built by Shah Jahan, had gardens built in Chahar Bagh format. However, Shah Jahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal. He developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. Other famous gardens are Shalimar Gardens in Kashmir and in Lahore, Mughal Gardens in Pinjore, Ram Bagh in Agra, to name a few. The creation of large empires that brought different regions under their rule helped a cross-fertilization of artistic forms and architectural styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural styles in the construction of their own buildings. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa. In Vrindavan, near Mathura, temples have been influenced by the architectural styles similar to Mughal palaces in Fatehpur Sikri. Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. Here's a chance to recall the main points covered in this session. So students, आपने समझा कि किस तरीके से जो बाग थे, गार्डन्स थे, वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते थे मुगल एम्पायर्स के जो कंस्ट्रक्शंस होती थी उनका. चार बाग, शालीमार बाग आपने जरूर सुना होगा. ठीक है, शालीमार बाग गार्डन जिसको हम बोलते हैं दिल्ली में. ठीक है.
तो ये सब क्या हमने देखा, आर्किटेक्चर हमने देखा कि मुगल्स के टाइम पे किस तरीके का आर्किटेक्चर होता था। क्लियर।